Starting with the very first question, we have already done this question before. They have asked us why there is a high voltage. Why do we need a high voltage? So we know that the power cable, so that the losses in the power cable should be low and current भी उसके against क्या हो हमारे पास low. So option number D. Transformers के case में the need things that we need to remember is it works on the phenomena of electromagnetic induction, and there are two coils wound around a system in which the one to which input is given, alternating input is given, is known as primary, and uske number of turns is known as ampere, voltage is known as Vp, and current is known as Ip. The coil from which the output is taken, for example, lamp attacher or anything, that is known as secondary coil. Voltage is known as Vs, Ns, and Is. The thing that we need to remember is there is no electrical connection between primary and secondary. Voltage is induced through induction. Is that enough for transformers, or should I go through the formulas as well? What do you mean by there's no electrical between primary and secondary? Now, let me. Okay. Suppose this is primary and this is secondary. Okay? Although they are wound on the same iron core, which is a conductor, but it is made sure that there is no electrical connection between these two by using fiber sheets or any other insulator between the iron core. Iron core एक thick core नहीं होता, बल्कि जो है वो यूज करते हैं इसके अंदर शीट्स ऑफ आयरन यूज करते हैं. इन बिटवीन देयर इज प्लेस्ड फाइबर शीट्स, दैट इज के अक्रॉस द सरफेस यहाँ पे इधर along this area there is no electrical connection. Whatever happens between these two coils is through induction. Okay, so जब यहाँ पे हम लोग उस पे alternating current प्रोवाइड करते हैं, तो ड्यू टू चेंज ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट मैग्नेटिक फील्ड इज इंड्यूस्ड. दैट अब वो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या है? चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड है ड्यू टू ऑल्टरनेटिंग करंट. ड्यू टू दिस चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, this magnetic field will link to this secondary, and as the magnetic field is changing, so changing magnetic field leads to induced EMF, and वो induced EMF यहाँ पे हमें अपेयर होगा. ओके, देयर आर टू फॉर्मूलाज. एक टर्न रेशियो होता है NS over NP is equals to VS over VP, and second one is VS over VP is equals to IP over IS. This formula is derived from the power equation, that power input is equals to power output in ideal transformers. कि आइडियल ट्रांसफार्मर्स के अंदर जितना आप इनपुट पे देंगे उतना ही पावर आउटपुट आएगा. अकॉर्डिंग टू विच इनपुट पावर का फॉर्मूला क्या होता है? VI. तो प्राइमरी की वोल्टेज एंड करंट वुड बी रिप्रेजेंटेड VP एंड IP, and secondary VS and IS. And this is for, in order, step up transformer होगा तो NP greater than NS होगा, and VS जो है वो less than VP होगा, and this is for स्टेप अप. अगर हम स्टेप डाउन की बात करें तो
NS, सॉरी मैंने उल्टा कर दिया, ये स्टेप डाउन है। नहीं, सही लिखा था मैंने, स्टेप अप ही था। एंड स्टेप डाउन में क्या होता है? NP इज लेस देन, नहीं, स्टेप डाउन ये स्टेप अप, कितनी स्टूपिड सी चीज में आगे कंफ्यूजन हो रही है मुझे। NVS इज लेस देन VP, एंड यहाँ पे साइन जो है वो ऑपोजिट होगा। और जो स्टेप अप ट्रांसफार्मर्स होते हैं उनमें आउटपुट वोल्टेज जो है वो बिगर होती है, और जो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर्स होते हैं उनमें आउटपुट वोल्टेज जो है वो स्मॉलर होती है। ठीक है, Okay. डोंट जज मी। रोजा अभी थोड़ी देर पहले ही खोला है तो हालत नहीं है, डाउन हुई सी है। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन रिलेटेड टू ट्रांसफार्मर्स। उन्होंने बोला है व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ हाई वोल्टेज एंड यूजिंग एन अल्टरनेटिंग करंट, व्हाट वुड बी द एडवांटेज ऑफ दिस वन? विल स्ट्रेट गो टू ऑप्शन नंबर C एंड D। D. ठीक है, एंड व्हाई इज D द राइट ऑप्शन? यहाँ पे उन्होंने क्या लिखा हुआ है? ऑल्टरनेटिंग करंट हैज नथिंग टू डू विद द रेजिस्टेंस, ओनली हैज टू बी, इट अभी हमने रिसेंटली अभी जस्ट डिस्कस किया, alternating current would leads to an changing magnetic field, which would induce an EMF in the secondary coil. Okay, now there comes your favorite topic, जिसमें उन्होंने बोला हुआ है। अच्छा, अब यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे टू रूल्स, कौन कौन से? Lenz's law and right hand rule. यस, राइट हैंड रूल हम लोग लगाएंगे इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द, बल्कि राइट हैंड रूल भी नहीं हम इसमें लगाएंगे, बिकॉज वी डू नॉट हैव, बट एनी हाउ लेंसेज लॉ के अकॉर्डिंगली ये हमारे पास कॉज है and this is effect, and they will always oppose each other, and due to that opposition, अब when the magnet is moving towards the coil, कौन सा पोल इसके आगे आएगा? यहाँ पे कौन सा पोल आएगा? साउथ, एंड यहाँ पे कौन सा आएगा? नॉर्थ, बिकॉज इसने उसको क्या करना है? रिपेल करना है। Oppose. तो यहाँ पे नो, अब अकॉर्डिंग टू राइट हैंड रूल विल कर्ल आवर फिंगर्स इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। अब हमारा थंब किस तरफ पॉइंट करेगा? टुवर्ड्स राइट ना, तो हम अपनी फिंगर्स को कैसे कर्ल करेंगे? तो हम डायरेक्शन ऑफ करंट भी बता सकते हैं, डायरेक्शन ऑफ करंट वुड बी समथिंग लाइक दैट। राइट हैंड रूल थे ना, राइट हैंड रूल क्या थे? एक रूल था हमारे पास कि पुट योर थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, एंड कर्लिंग फिंगर हमें बताएंगी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। सेकंड रूल क्या था? Yeah. Curl your finger in the direction of current, and the thumb pointing in the direction would tell us the north pole. So due to the lenses law we already know कि यहाँ पे north pole होगा। So in order, अब हमने अपना thumb किस तरफ रखना है? towards right, तो हमारी fingers automatically curl होंगी उस direction के अंदर। Okay? Yeah. अब क्वेश्चन है कि which would increase the reading on the ammeter? So in order to increase the reading on ammeter, हम magnetic field strong कर सकते हैं, हम नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल इंक्रीज कर सकते हैं, हम लोग जो है आयरन कोर प्लेस कर सकते हैं, और वी कुड इंक्रीज द relative motion, increase speed of the relative motion. Let's see the वो पोल ऑपोजिट करने से सिर्फ एमिटर की रीडिंग ऑपोजिट होगी, सो ऑप्शन नंबर ए इज इनकरेक्ट। पुटिंग द मैग्नेट आउट ऑफ द कॉइल, इससे भी अगेन डायरेक्शन, सिर्फ डायरेक्शन हमारे पास चेंज होगी इन दोनों से। पुशिंग द मैग्नेट फास्टर, ओके वी हैव, ये वाला ऑप्शन आ रहा है, इंक्रीज द स्पीड, एंड अनवाइंडिंग, इससे हमारी वैल्यू क्या होगी? डिक्रीज होगी, सो लीविंग अस विद ओनली वन ऑप्शन व्हिच इज सी। ओके, Okay. then comes the transformer.
Is it a step up transformer, step down transformer? Step down. Because Vs is less than Vp. Okay, they have asked us what is the power dissipated. What values do we have? We have voltage. We have resistance. Okay. We know that the voltage and resistance has a direct relationship. So what can we do? हमारे पास data given is That one. Remember when you 240 used वोल्ट that यहाँ पे दिया हुआ है. formula? V is equals to V square over R का फॉर्मूला यूज होगा. तो V स्क्वायर कितना है? 240 स्क्वायर. बिकॉज उसने बताया हुआ सेकेंडरी कॉइल की वोल्टेज कितनी है? 240 एंड R वैल्यू इज 120. तो आई गेस 120 एंड 240 कैंसिल आउट होगा तो 2 आएगा एंड 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4. It's देखो क्या आंसर बन 480. रहा है इसका. 480 is option number C and D. And उन्होंने करंट फाइंड आउट करने को बोला हुआ है. Since we have the power which is 480, so power is equals to VI का फॉर्मूला लगा के हम I फाइंड आउट कर लेंगे. So 480 divided by 240. क्या आंसर आ रहा है? Two. अच्छा, तो करंट इन द प्राइमरी कॉइल Isn't पूछा it हुआ है. power? सॉरी. करंट उन्होंने प्राइमरी में पूछा हुआ है. तो प्राइमरी की वोल्टेज हमारे पास है. हमें पावर फाइंड आउट करनी है. What is the power dissipated in the resistor and current in the primary? Okay, current in the primary It's find out the करने के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? Vs over Vp is equals to Ip over Is. So by putting can't the we value what just use a normal power formula? हमारे पास पावर है नहीं ना प्राइमरी की. How can we use the Oh, formula? Power of V is equals to I. हमारे पास पावर होती तो हम okay. पावर is equals to Vi यूज करते हैं ना. तो Vs की वैल्यू कितनी है? 240 एंड Vp की वैल्यू कितनी है? 600. IP is to find out. तो ये IS यहाँ पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा. तो IS की वैल्यू कितनी निकली थी हमारे पास? 480 डिवाइड बाय 242 आंसर आया था ना. Yeah. सो टाइम्स 2. Yeah, 0.8. which is option number C. But even like when I used the normal formula, I got 0.8. आपने पावर की क्या वैल्यू यूज की थी? 480. चलो वो बाय लक आंसर ठीक आ गया. बट ऑब्वियसली रिमोटली भी वो लॉजिक अप्लाई नहीं हम कर सकते हैं यहाँ पे. ओके, वी हैव नॉर्थ एंड साउथ पोल. साउथ मिसिंग है यहाँ पे. डायरेक्शन ऑफ करंट हमारे पास क्या होगी? अपवर्ड. हमें उसने बोला है व्हाई इज अ स्प्लिट रिंग कॉम्यूटेटर यूज. स्प्लिट रिंग कॉम्यूटेटर क्यों यूज होता है? टू कीप द डायरेक्शन ऑफ करंट इन द कॉइल सेम. So we have to look for that option. I guess B option में लिखा हुआ उन्होंने. To change the direction of current in the coil as the coil passes the vertical position. क्योंकि जिस पोजीशन पे करंट ने चेंज होना होता है उसी पोजीशन पे कॉइल अपनी डायरेक्शन क्या करती है? चेंज. कॉइल अपने कॉन्टेक्ट्स चेंज करती है among these two. देखो Wasn't the सी एंड डी तो कैंसिल आउट हो रहा है. उसका रीजन क्या है? उसने बोला है तो चेंज डायरेक्शन ऑफ करंट द डीसी सप्लाई. डीसी सप्लाई में डायरेक्शन ऑफ करंट चेंज नहीं होती. वो तो ऑलरेडी डायरेक्ट करंट दे रहा है हमारे पास. ठीक है. ए ऑप्शन क्यों इनकरेक्ट है? टू चेंज डायरेक्शन ऑफ कॉइल इन डायरेक्शन इन द कॉइल एज कॉइल पासेस द हॉरिजॉन्टल पोजीशन. हॉरिजॉन्टल पोजीशन में तो ऑलरेडी इन कांटेक्ट होगा. डायरेक्शन चेंज नहीं होगी. डायरेक्शन सिर्फ कब चेंज होती है? जब वर्टिकल पोजीशन में आती है. yeah, okay. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन. ये हमने कल भी किया था. ऐसी जनरेटर की आउटपुट कौन सी होती है वन कंप्लीट रेवोल्यूशन के अंदर? Uh
Isn't it D? Yes. या तो बहुत ही बड़ा हो रहा है या बहुत ही छोटा हो रहा है. दिस इज राइट. अब एक क्वेश्चन पूरा आ रहा है. हाँ जी, दिस इज. ये किसकी आउटपुट होती है? डायोड की. The ये किसकी diode. आउटपुट होती है? Yeah. ये हमारे पास डायरेक्ट करंट होता है. ये हमारे पास कौन सा होता है? सिंगल डायोड की आउटपुट होती है, which is also known as half wave rectifier. Rectification is a process which converts alternating current into direct current. Okay? Okay. अब ये एग्जैक्टली वही क्वेश्चन है जो हमने प्रीवियसली अटेम्प्ट किया, बट इधर उन्होंने हमसे पूछा हुआ है कि which does not produce an increase in the reading. ठीक है? Now let's see. This is the right one. This would increase the value. This would nahi. Increasing the resistance of the emitter does not produce an increase in the reading. Yes, this could be the right option. Increasing the speeding, हाँ ये दोनों तो cancel out हो जाएंगे, leaving with the only option number B. Okay, because बाकी option number A, Okay. B, C and D would increase the value of current. So उसने कहा does not produce an increase in the current. So which would be the right option? Option number B. Let me erase rest of the options so that. Did you get the file जो मैंने आपको कल भेजी थी, notes and everything? Yeah. Okay, which one is the commutator here? D. Yes. ऑप्शन नंबर ए क्या है हमारे पास? मैग्नेट. बी क्या है? आर्मेचर. सी क्या है? कॉइल. Coil. सॉरी सॉरी, बी इज द आयरन कोर. सी सी कॉइल और उसको हम आर्मेचर भी कहते हैं. डी इज द Oh. स्प्लिट रिंग्स, ऑल्सो नोन एज कॉम्यूटेटर. Okay. Moving on to the next one. Here we have a transformer. What is the efficiency of the transformer? How do we get the efficiency? Power output over power input का formula use करके. Power output क्या आएगा? 2 into 24. 12 24 and 250 into 0.1 कितना आएगा? 25. 25. So power output over input is 24 divided by 25 multiplied by 100. I guess 96 आएगा. Yeah. 0.96. अब उन्होंने बोला है, ये कल हमने इस तरह का क्वेश्चन किया भी था. द कॉइल इन द जनरेटर रोटेट्स 20 टाइम्स इन 1 सेकेंड. ठीक है, 20 टाइम्स इन 1 सेकेंड हमारे पास वैल्यू आ गया, विच मीन्स 20. एंड टाइम पीरियड कितना है हमारे पास यहाँ पे? 0.050. तो यहाँ से हमारे पास फ्रीक्वेंसी आ जाएगी. एनी हाउ उसने 20 टाइम्स बोला हुआ है, तो विच वुड बी द राइट ऑप्शन? 20 टाइम्स फास्टर है. किस में आउटपुट Um. इंक्रीज हो रही है? ए में कॉन्टिन्यूस है, इसमें भी चेंज नहीं हो रहा ईएमएफ. मतलब चेंज हो रहा है, फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है, बट वो नहीं हो रहा. सी तो बिल्कुल ही नहीं होगा, लीविंग अस विद ओनली ऑप्शन नंबर डी. बिकॉज हियर वी कैन सी के जो पीक है उसकी हाइट हमारे पास क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है. Mm, देन वी हैव विच मटेरियल इज यूज्ड फॉर द कोर. कौन सा यूज होता है? आयरन. एंड क्यों होता है? बिकॉज इट इजीली मैग्नेटाइज एंड D. डीमैग्नेटाइज. सो डी इज द राइट ऑप्शन. Then we have which device uses this effect? Movement of wire है. कौन सी डिवाइस में होता है ये? Battery. जनरेटर.
Cause change of magnetic field emitter के across reading show करेगी and that only occurs in generator. Rest of the options contain input पे वो होता है हमारे पास. Okay. Then we have why is a transformer used to connect a generator in power station to a long distance transmission line. क्यों हम ट्रांसफार्मर कनेक्ट करते हैं? We know that to increase the voltage, तो option number C and D. C. So option number C is the right one because to increase the voltage and to increase the value of current. Then we have a bar magnet. उसने बोला which of the following affect the magnitude of the deflection? Direction के change करने से कोई effect आएगा magnitude of magnetic field पे? I mean emitter पे? Yeah. Direction change करने से magnitude पे कोई effect नहीं आता. सिर्फ emitter की deflection opposite direction में चली जाती है. तो उसने कहा which would affect the magnitude? So we have this option by increasing the speed with which the magnetic enters the coil. बाकी सब में कुछ भी नहीं होगा. अगेन एसी जनरेटर की आउटपुट पूछी हुई है, कौन सा बनेगा इसमें? B. डी. B. डी तो नहीं होगा. I said B. Why are you saying B again and again? B for bear. Yes. डी क्यों नहीं होगा? Because we could clearly see कि यहाँ पे सिग्नल का डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा. Okay. So which pole is produced at X when the magnet is moved in and when it is moved out? Moved in पे कौन सा होगा? North. Yes, and out पे? South. This color, okay. Because cause and effect always oppose each other. Now we have the AC generator producing alternating EMF. The speed of the generator is doubled. जब speed double होगी तो हमारे पास voltage पे क्या effect आएगा? EMF increase होगा? Value of EMF increase होगा कि decrease होगा? Increase. So which would be the right option? A, B, C or D? D. I give you a hint. D. Thank you for the hint. No problem. I'm so generous in giving hints. Okay, this question is totally on you. Give me an answer in 20 seconds. Less than 20 seconds. Higher reading on the voltmeter कौन produce करेगा? C. Yes. Cause इन दो में same speed and slower speed से कोई effect नहीं पड़ेगा, slower speed से कोई effect नहीं पड़ेगा, option ही सिर्फ एक रह जाती है हमारे पास. I'm having a good influence on you. Smarter होती जा रही हैं अब दिन ब दिन. What is the time for one complete rotation of the coil of the generator? One complete rotation कहाँ से कहाँ तक आ रही है? Up till here. How many box do we see? 1, 2, 3 and 4. Each box is 5 millisecond per centimeter. So 5 into 4. 20. Because units देखो cancel out हो रहे हैं. Yes. 5 milliseconds per centimeter into 4 milliseconds. Into 4 centimeter. Because each box is 1 centimeter. Centimeter units cancel out हो गए, leaving us with only milliseconds. So 20 milliseconds. अगर उसने frequency पूछी होती तो हम इसको 1 divided by time period कर देते. Yeah. Up they have asked the electromotive force induced in a conductor moving in right angle magnetic field does not depend upon. किस पे depend नहीं करती? The length. Yes, cause resistance पे भी करेगी, speed पे भी करेगी and resistance of the conductor पे नहीं करेगी. Resistance of the conductor पे नहीं करेगी.
बिकॉज इंड्यूस्ड ईएमएफ है ना, राइट एंगल टू लेंथ ऑफ द कंडक्टर हमने पढ़ा तो नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल। Oh, yeah. But then लिविंग लिविंग अस विद isn't ओनली वन EMF? ऑप्शन ना, विच इज द रेजिस्टेंस। वो तो फिर बात की बात है ना कि रेजिस्टेंस कितना इफेक्ट करेगी उस पर या क्या करेगी। बट Okay. स्ट्रेट अवे वी नो दैट के स्पीड से भी इफेक्ट पड़ता है, स्ट्रेंथ से भी इफेक्ट पड़ता है, एंड लेंथ ऑफ द कंडक्टर से भी इफेक्ट पड़ता है। वी आर लेफ्ट विद ओनली वन ऑप्शन। Mm. ओके, उसने बोला विच पॉइंट ऑन द ग्राफ शोज व्हेन द कॉइल इज वर्टिकल। वर्टिकल पोजीशन पे आउटपुट क्या होती है हमारे पास? Highest? वर्टिकल पोजीशन पे कोई मैग्नेटिक फील्ड कट नहीं करी होती उसको। Oh, सो ऑप्शन yeah, नंबर so बी। B. वो horizontal में highest होता है. हाँ, cause the magnetic field maximum कट करी होती है। उसने बोला डायग्राम Mm. shows three electrical devices X, Y and Z and which device provides an alternating voltage। ये तो नहीं करेगी क्लियरली, ये भी alternating voltage करती है। फिर हमारे पास कौन सी ऑप्शन रह जाती है? सॉरी, प्रोवाइड्स, प्रोवाइड्स X. लिखा हुआ है, प्रोवाइड्स तो X and Z। तो लगा डज नॉट प्रोवाइड, कॉज ये हमारे पास Wait, वो I लगे हुए हैं don't. स्लिप रिंग्स, ये स्लिप रिंग्स लगे हुए हैं। और ट्रांसफार्मर का हम ऑलरेडी पढ़ के हटेंगे, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्यों करता है? ड्यू टू द ऑल्टरनेटिंग करंट, और उसके Mm. आउटपुट पे भी चेंजिंग वो आती है। सो दिस इज कॉम्यूटेटर लगा हुआ है तो उसमें डायरेक्ट आउटपुट आएगी। सो लिविंग अस विद ओनली ऑप्शन Oh, नंबर एक्स yeah. एंड जी। अब उसने कहा व्हाट हैपेंस टू द गैल्वेनोमीटर एज द मैग्नेट फॉल्स अवे फ्रॉम द कॉइल। अब ये तो हमें पता है कि जब टूवर्ड्स जा रहा होगा तो गैल्वेनोमीटर राइट पे होता है, जब अवे जाता है तो वो किस पे होता है? लेफ्ट पे होता है। तो हम कौन सी ऑप्शन चूज करेंगे ए एंड बी में से? इट गिव्स अ कॉन्टिन्यूस रीडिंग टू द लेफ्ट। कॉन्टिन्यूस नहीं आती, हमें मोमेंटेरली रीडिंग आएगी टू द लेफ्ट, क्योंकि एज इट मूव्स अवे तो वो मोमेंटेरली डिफ्लेक्ट करेगा एंड देन कम बैक्स टू जीरो। कॉन्टिन्यूस तो तब आएगा जब बैक एंड फोर्थ वो मूव करेगा। और उसने ऑलरेडी हमें बताया भी, वह हिंट भी दिया हुआ कि मोमेंटेरली डिफ्लेक्शन आती है टू द राइट एंड जीरो। अगर टुवर्ड्स जाते हुए मोमेंटेरली आ रही है एंड जीरो पे आ जाएगी, तो अवे जाते हुए भी क्या आएगी? मोमेंटेरली एंड टू द ऑपोजिट डायरेक्शन। क्लियर? Yeah. अब उसने कहा है द मैग्नेट इज देन पुल्ड आउट क्विकली। डायरेक्शन एंड साइज ऑफ करंट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? The direction is unchanged. यस, नहीं, डायरेक्शन उसकी रिवर्स होगी एंड क्विक चूंकि उसने आउट किया है तो वैल्यू ऑफ करंट वुड बी इंक्रीज्ड। हमने अभी भी तो बात की है कि जब टुवर्ड्स जाएगा तो डायरेक्शन इज इन वन, डायरेक्शन इज टू द राइट, और जब अवे जाएगा टू द लेफ्ट। अभी अभी तो हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में डिस्कस किया है यहाँ पे, ये टू द लेफ्ट, कि जब अवे जाता है तो लेफ्ट पे होती है, जब टुवर्ड्स जाता है तो राइट पे होती है। अब उन्होंने हमसे पूछा 25 was कि the diagram shows an alternating generator connected to an electrical circuit. Which statement is direction of potential difference across the load resistor is always the same? Same होगा? Um, no. Cause alternating है तो same नहीं होगा। The size of the induced EMF does not change as the coil turns. It does change cause alternating current है। Winding the coil in a soft iron core makes no difference on the induced EMF. No, if we would wound it on a soft iron core, हमारा output automatically क्या करेगा? Increase करेगा, leaving us with only option, which is option number B. The size of the induced EMF depends on the number of turns in the coil. Rest of the options are incorrect. Then we have the first theory question. They have asked us why there's an induced EMF in the circuit. So we would say that due to the change of Magnetic field. magnetic Can you flux. zoom out a bit? Magnetic flux? Yes.
because this is a magnet. So number of field lines passing through the coil would change, and that change of magnetic field lines across the coil would induce an EMF in the circuit, which would be shown by the sensitive voltmeter. Because 1 marks question is हम लोग ज़्यादा डिटेल में जा नहीं रहे हैं. We're only writing that due What's to the change of magnetic field lines or magnetic flux. Oh, so I can write magnetic field line and I would still get the mark? Yeah, yes, due to change of magnetic field lines. Okay. Then we have said what happens in a needle of the meter when the magnet is released from rest and pulled up by the spring. तो क्या होगा? It would deflect to the left momentarily. Why? क्योंकि उसने क्या pulled up by the spring. ठीक है? अगर वो कहता pulled down के टाइम पे क्या होता तो हम कहते to the right. But they are saying कि when it is pulled up, तो pulled up में वो opposite direction में जाएगा तो left आएगा. Okay? Okay. नहीं समझ में आया? Why does it deflect to the left? मतलब जब टूवर्ड्स हमने ऊपर एमसीक्यू भी तो किया था ना कि व्हेन इट गोज डाउन तो वोल्टमीटर राइट पे डिफ्लेक्ट करता है एंड इट गोज अप इट डिफ्लेक्ट्स ऑन द ऑपोजिट डायरेक्शन तो उसने यहाँ पे पुल्ड अप बाय द स्प्रिंग बोला हुआ तो इट वुड मूव इन द लेफ्ट डायरेक्शन. Okay. Then we have the magnet continues to oscillate up and down. If the magnet is continuously going up and down, the pointer would also Needle. Well, or needle would go back and forth. Go left to right or right to left कहते रहेंगे. Then we have a transformer question. We need to find the number of turns of coil. So formula क्या होता है number of turns का हमारे पास? NS over NP equals to VS over VP. NS is given as 8,000 turns. Sorry, NS तो हमने find out करना. NS, sorry. हाँ सही लिख रहा था मैं. NS हमने find out करना is equals to VS which is 6 times NP which is 8,000 divided by VP which is 240. 200. Since it's a step down transformer, so clearly NS is less than NP, which is 200 versus 8,000. Then they have asked us to find out the current in the primary coil. Current in the primary coil कैसे find out करेंगे? We have the formula. No, they're asking for power. Sorry, power in the primary. So power is equals to VP IP and do they have given any current? Current Yeah, हमने they कहीं gave calculate it. किया? They did. Down in the question. 0.05. हाँ 0.05 and VP हमारे पास कितना था 240 times 0.05. So this would give us 12 watts. 90% of the input power to transfer calculate the current in the lamp, which means हमें output power calculate करनी है. For output power हम लोग सबसे पहले 90% उसने हमें दिया हुआ है, which is the efficiency. Output over input. Input हमारे पास कितना था 12. So 12 into 90 over 100 would give us the power, which would be 10.8. 10.8. So power, sorry, current is equals to power
over voltage. Power is 10.8 and voltage was 6 volt. So 10 divided by 6 is 1.8. okay. A position Y पे magnet की direction. Explain why the emitter shows deflection. Again, the same question due to the change of magnetic field lines across the coil. The magnet passes the middle point of the solenoid and continues to fall. It reaches to position Y. Describe and explain what is observed on the emitter as the magnet falls from the middle of the point to the position Y. First point क्या होगा? Meter would deflect to opposite direction and as it would fall due to the change of magnetic field lines, EMF would be induced in opposite direction. लेंसेज लॉ को डिस्कस करने की जरूरत है वैसे 4 मार्क्स हैं लेकिन उन्होंने हमसे पूछा नहीं है उन्होंने सिर्फ मीटर के बारे में पूछा बस लेट्स नॉट गेट इनटू द lenses law. Suggest two changes to apparatus that would increase the initial deflection. वो कैसे हो सकता है हमारे पास? Deflection strong कैसे हो सकती है? The increasing the current. अब वो तो induce हो रहा है भाई. Stronger magnet, increasing speed, adding iron core, or increasing the number of turns of coil. Or Wait, use. can you go back to the 4-mark question? Yes. They said that the magnet it falls to the solenoid, so won't like current also be induced? हाँ तो वो भी लिख सकते हैं हम लोग. EMF would eventually leads to the current में. And बल्कि हमें लिखना चाहिए गुड पॉइंट बिकॉज उसने यहाँ पे एमिटर बोला हुआ है. Your change of magnetic field EMF would induced which in the opposite direction causing current to produce in opposite direction. Good point. and Because what do उन्होंने they mean एमिटर by the बोला हुआ. deflection? डिफ्लेक्टिव पॉइंटर की मूवमेंट को डिफ्लेक्शन ही कहते हैं और क्या नहीं. So the pointer only deflects when like a current is induced or what? Yes, because emitter is meant to measure the current ना. अगर करंट आएगा तभी तो डिफ्लेक्ट करेगा वो. So if there's greater current, then it would deflect to the left, and if there's less, it would deflect to the right. नहीं नहीं. Left and Your right is glasses only. Left and right is only when the direction of magnet is changed. Oh. But here the magnet was stationary at first and then they released it, so that's why it deflects. Yes. But It then deflects. It deflects by if अगर point magnet यहाँ से इधर आया towards the solenoid आया. ठीक है. So जब ये towards आ रहा होगा तो pointer किधर deflect कर रहा होगा? To the right. जब ये इसको बाईपास कर जाएगा और ऑपोजिट डायरेक्शन हो जाएगी अब उसकी मतलब अब नॉर्थ पोल इज डाउन एंड साउथ पोल इज अप तो अब डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट वुड बी इन द ऑपोजिट डायरेक्शन. okay.
Okay. Explain what is observed on the meter. Obviously, जब relative perpendicular motion to the magnetic field होता है, due to the change of magnetic field, EMF is induced in the circuit, which would leads to the induced current. The You vertically skipped a down होगा? question. No, I did not. Which question I skipped? Yeah, they said to draw field lines. Oh, from here to here to here to here. North to south. Already answered this part. So due to the perpendicular. Oh, I totally forgot the spelling for perpendicular. PER. आते हैं वही मजाक कर रहा हूँ. Mm-hmm. Due to the You अबे spelled सही it लिखा wrong. है. नहीं नहीं. perpendicular. It's right. PERPENDICULAR. Perpendicular. It's right. Due to the perpendicular motion, the change of field line would induce a current in the conductor. Looks like I have vertically down at a greater speed. Deflection क्या होगी? Would be more. To the right. फास्टर की वजह से मोर डिफ्लेक्शन होगी ना, ग्रेटर स्पीड की Yeah, वजह से yeah. ज्यादा करंट प्रोड्यूस होगा. And vertically upward in the same, तो deflection in opposite direction. क्योंकि आपने स्पीड What if कांस्टेंट रखी. I said deflection to the right, would that be correct? We have not said use the right or left anywhere ना, so we cannot say for sure कि right पे होगा या left पे होगा. Sorry, we cannot say for sure वाला part नहीं. जब हमने direction discuss ही नहीं किया तो फिर हम उसको बस इतना ही बोलेंगे, it would go in the opposite direction. Okay. Then we have figure shows a wire PQ on the graph sketched arrows to show the direction of magnetic field lines from north to south. The force on the PQ is into the paper. Draw an arrow to show the direction of current into the page है. So direction of current कहाँ पे होगी? To the right. Because हमारा according to जो है right hand rule, उसने हमें थंब कहाँ पॉइंट करने को बोला हुआ है? North to south. Into the page. So P to Q हमारे पास direction of current बनेगी. फिर उसने बोला हुआ है suggest a suitable detector for the beta particle. रेडिएक्टिव रेडिएशन को डिटेक्ट करने के लिए suitable detector कौन सा होता है? Geiger counter. Geiger Moller counter, but I forgot the spelling for molar. So let's say Geiger counter. State the Wrong. direction. State the direction of the force on the beta particles. So अगर करंट की ऑपोजिट डायरेक्शन में बीटा पार्टिकल पे फोर्स लगती है, तो अगर पहले इनटू द पेज था तो अब क्या होगा? आउट ऑफ द प्लेन. बिकॉज इफ यू रिमेंबर जब हमने मैग्नेटिक फील्ड्स डॉट एंड क्रॉस में पढ़ा था, तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस के ऊपर फोर्सेस कहाँ लगती हैं? ऑपोजिट डायरेक्शन में लगती हैं. डिस्क्राइब द पाथ ऑफ बीटा पार्टिकल इन स्पेस बिटवीन द पोल्स ऑफ द मैग्नेट. पाथ उसका हमेशा क्या होता है? कर्व्ड पाथ होता है. हम लोगों ने अल्फा बीटा एंड गामा पार्टिकल की रेडिएशंस पढ़ी भी हुए हैं. व्हाट हैपेंस टू द एयर मॉलिक्यूल्स अलोंग द पाथ ऑफ द बीटा पार्टिकल्स? वो क्या होंगे? आयनाइज होंगे.
Then उसने बोला at the instance illustrated in figure 5.1, the coil ABCD is horizontal and the battery is connected as shown. For this position, state the direction of the force on AB and direction of the motion of AB. अब करंट की डायरेक्शन ये है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है. सो एज पर राइट हैंड रूल हमारे पास AB साइड कहाँ पॉइंट आउट करेगी, डाउनवर्ड या अपवर्ड? Put your fingers in the direction. Where is your thumb pointing, downward or upward? Upwards. Down. फिंगर आप, मैग्नेटिक फील्ड यहां से यहां, करंट अपवर्ड जा रहा है. Oh, okay. बल्कि लेट मी ब्रिंग दैट हैंड जो हम लोग कल लेके आए थे, उसकी डायरेक्शन से पता चल जाएगा. उसको हम रोटेट कर लेंगे एंड नहीं, ये वाला नहीं था. That's a different hand. यस, कल वाला अच्छा था. Let's rotate this hand. That hand is so ugly. अस्तगफिरुल्लाह. अब मैं इसको कैसे सेट करूं? मैग्नेटिक फील्ड यहाँ है, अब मैं इसको ऊपर की तरफ भी Just नहीं ले जा delete it. सकता. I can't look at it. कहाँ गया वो वाला हैंड? Let me try with this one. Don't be racist with this hand now. Racist? That hand looks old. उसकी फिंगर सेट नहीं हो पा रही है मेरे से. बट जस्ट गेट द आइडिया ना कि No, understand. I want the old hand back. I don't know where that hand went. Anyhow, How let's not many waste time. हमारा pictures of hands do you have? टाइम नहीं है हमारे पास. Let's go to the next part. Explain why Wait, how many BC does fingers not. do you have? मैं तो गूगल से फाइंड आउट कर रहा हूँ. Oh, I thought you saved कल भी them मैंने, all. नहीं मैंने गूगल से, मैं मुझे इतना भी, अस्तगफिरुल्लाह. I'll say the word when I'm not recording. Just remind me. I need to answer that. उसने बोला why does BC does not contribute to the reading? Because BC is parallel to magnetic field and only that side contributes which is perpendicular to the magnetic field. So the force on B is down. Down and anti-clockwise. Because BC side is parallel to magnetic field. At the instant when the coil is vertical, the spring content do not in fact make the content due. So क्यों करेगी describe and explain? So due to inertia, it would continue its motion until its contacts are back in the right position. ठीक है? Inertia. Due to inertia or momentum, coil will keep moving in that direction until contact is made again. ठीक है? अब coil was like this and it was going in this direction. So जब वो vertical position में आएगी, ठीक है? So it's going in this direction. So due to inertia, it will keep going in this direction. Although the contacts are broken, they are not in contact anymore. Suggest one change that could be made to increase the speed of the motor. कैसे हम speed को increase कर सकते हैं? Increase the number of turns. Yes, number of turns से भी कर सकते हैं.
लार्जर करंट से भी कर सकते हैं, स्ट्रॉन्गर मैग्नेट से भी कर सकते हैं। And the last question, it's a current carrying conductor, not this out on figure. Draw the label force. अब यहाँ पे कौन सा रूल लगेगा? लेफ्ट हैंड रूल For direction of current? फॉर डायरेक्शन ऑफ फोर्स। करंट तो उसने दिया हुआ है ना, नॉर्थ टू साउथ, Oh, yeah, left hand. so it would point in the downward direction. Explain why the force acts on the wire due to magnetic field interacts with the magnetic field of the current carrying conductor. Direction of current of the magnet are both reversed. When magnetic field and current both reverse हो जाती है तो direction of force क्या रहती है? Same. Direction of force would only change if current or magnetic field is changed. Oh. And P उसने बोला हुआ है क्रॉस का साइन है विच मीन्स मैग्नेट हमारा जो थंब है डाउनवर्ड पॉइंट आउट, सॉरी थंब नहीं, हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड वाली फिंगर है, इंडेक्स फिंगर है, इट वुड मूव इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। एंड एज इट्स नेगेटिव पार्टिकल सो हम अपनी फिंगर इस डायरेक्शन में नहीं बल्कि इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में रखेंगे, बिकॉज करंट इज ऑलवेज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, सो आवर थंब विल पॉइंट इन द, we would see कि हमारा thumb downward point out कर रहा होगा, तो curve would be in the downward direction. Describe the path. Path again हमारे पास क्या होगा? Curved होगा, क्योंकि negative particles हैं, negative particles में हमेशा curved particle होती है। Conventional current की direction हमेशा positive to negative होती है, so यहाँ पे upward होगा और यहाँ पे downward होगा। फिगर 1 पे उसने कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन बताने को बोला था। स्टेट डायरेक्शन इन विच द कॉइल रोटेट्स, तो अगेन हम लोग यहाँ पे क्या यूज करेंगे? लेफ्ट हैंड रूल, एंड लेफ्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंगली हमारे पास वी वुड हैव अ क्लॉकवाइज रोटेशन, थंब वुड बी पॉइंटिंग इन द upward direction, index finger in this direction, current finger in this direction, and the thumb would be pointing in the upward direction. किस साइड पे वैसे उसने बोला है, कौन सी साइड पे बोला हुआ? Straight direction with the coil rotates when viewed from the end closest to the brushes. एंटी क्लॉकवाइज डाउनवर्ड जा रहा है, सॉरी आपका भी डाउनवर्ड ही पॉइंट कर रहा है ना थंब? So the force would be in the downward direction. Force down and movement हमारी क्या होगी? एंटी क्लॉकवाइज according to left hand rule. Then we have state the difference between with using a battery with a larger potential, faster move करेगा, several turns of wire से भी faster movement होगी, stronger magnet से भी faster movement होगी. The structure of the motor is very similar to that of an alternating current generator. Use ideas about induction slip why the current from the battery falls as the motor speed up. तो Lenz's law के accordingly EMF क्या करेगी, उसको oppose करेगी, करंट को इस वजह से वैल्यू उसकी डिक्रीज करती है। Opposed? तो जितनी ज्यादा स्पीड होगी उतना ज्यादा opposing effects भी क्रिएट होंगे। Oh. Due to back EMF, it would oppose the motion, reducing induced EMF
and hence the value of current.